So hello everyone, welcome to the lecture 2 of Fundamental Right series. So in the lecture 1 we have discussed about what is fundamental rights. Okay, in which part of the constitution it is available, like it is available in the part 3 of Indian constitution, and from article 12 to article 35 its provision are. So in the lecture 1 we have covered from article 12 to article 14, and today in the lecture 2 we are going to start from article 15. So there is one more thing that you need to know, because it might be asked. So like the question can be asked, like we know that our constitution, we have drawn various, in our constitution the provision that we have added. Okay, so we have taken from many other countries, like from UK constitution we have taken some part, from US constitution. So it might be asked that fundamental rights that we have in our constitution is inspired from which of the following countries constitution. So fundamental rights is inspired by the Bill of Rights of American Constitution. So this fundamental rights that we are studying right now, okay, so this fundamental rights is actually inspired, or we have taken from the Bill of Rights of American Constitution, राइट। तो हमने ये फंडामेंटल राइट्स जो कहाँ से लिया है, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो अमेरिका वाज द, यू कैन से यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री to grant a constitutional status to fundamental rights. So we have taken this fundamental rights from the Bill of Rights of American Constitution. So this is another information that you can get. Okay. So now from today, in this lecture 2, we are going to start from Article 50. Okay, so let's start with Article 15. So what is Article 15? Okay, so what is Article 15? So in the Article 15, it is actually talking about the discrimination. So Article 15 is fundamental right against discrimination. So in the Article 14, we have studied right to equality. Okay, like equal protection of law, equality before law. So we have done that concept. And after equality, so there is Article 15, which talks about our fundamental rights against discrimination. Okay, so in Article 15, there is Article 15 Clause 1. Okay, so what Article 15 Clause 1 tells, that state, and what is state that we have discussed, states can be central government, central legislature, state government, state legislature. So this thing we have discussed already. So Article 15 Clause 1 says that states shall not discriminate against any citizen only on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि जो स्टेट है हमारा, ओके, वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स और एनी ऑफ देम, लाइक in providing anything, like government is distributing anything to their citizen, so it should be distributed equally. It should be not like that a certain caste of people will get this, certain people of caste will get that. So no. So article 15 clause 1 clearly tells that state shall not discriminate, right, against any citizen on the ground of caste, religion, race, sex, place of birth, or any of them, right? So on the basis of this, on the all the following grounds, states cannot discriminate to their citizens. So this is what Article 15 Clause 1 tells. Okay. Now there is another article, that is Article 15 Clause 2. So these all articles are under Article 15, which talks about right against discrimination. So discrimination can be of different types. Okay, it can be on the basis of race, sex.
So under this Article 15, there are different clause like Article 15 clause 1, 15 clause 2, 3, 4. So we will discuss all those articles in a very descriptive manner. Okay. So now there is another article, that is Article 15 clause 2. So what Article 15 clause 2 tells, it talks about both. Like in Article 15 clause 1, we talks about only state, that the state shall not discriminate. But what about individual also? Maybe individual can do discrimination, as we have seen in our country in past, that peoples were discriminating, and still we can see that in some of the areas where discrimination happens. So Article 15 clause 2 tells that it prohibits the states and the individuals. ओके तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेट को भी प्रोहिबिट्स कर रहा है, इंडिविजुअल को भी प्रोहिबिट्स कर रहा है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग एनी सिटीजन on the ground of this caste, religion, race, sex, place. Okay, in having access to public places. Okay, जैसे हमने previously past में हमने देखा है, we have studied in history that in before independence of India, like in the British era or in the kingship era, we have seen that certain tribal society or certain people from SC and ST were prohibited from accessing पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स, होटल्स, काइंड ऑफ लाइक घाट. हम लोग देखते थे कि उन्हें घाट में डिफरेंट जगह मिलता था बात करने के लिए, नहाने के लिए. सो वी हैव सीन इन द पास्ट. So that for that purpose there is Article 15 clause 2 which prohibits both state and the individuals. Okay, तो ये स्टेट को भी प्रोवाइड करता है और इंडिविजुअल को भी प्रोवाइड करता है. ओके, फ्रॉम discriminating against any citizen only on the ground. So what are the ground? So ground are same. Okay, so ground are same. This on the ground of caste, right? On the ground of caste, religion, race, sex, place of birth, or any of them. Okay, in having access to public places. और पब्लिक प्लेसेस में क्या आ जाएंगे? इन पब्लिक प्लेसेस सच एज पार्क्स, hotels, clubs, well, okay, tank, रोड एक्सेट्रा. सो कोई भी सिंपल हम लोग समझेंगे कि कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो होटल हो, पार्क हो, क्लब हो, वेल हो, टैंक हो, घाट्स हो, रोड हो, तो वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन on the basis of caste, religion, race, sex, place of birth, okay, in having access to those public infrastructure. So this is what Article 15 clause 2 talks about, right? Now there is another article, and that is Article 15 clause 3. अब क्या है कि हमने अब देखो, we are seeing here that there is fundamental rights which talks about, which gives fundamental rights against discrimination. Okay, but we can see in our country that there is some special provision for the welfare of women and children. हमने देखा है, although we talk about that we should not discriminate any people, like हमने यहाँ पे mention भी किया है that on the basis of sex, whether it is male or female or any of them. Okay, so states should not discriminate, but we have seen in our country that in most of the states we have seen there is some different provisions for females. Like in Bihar, we can see there is a different provision for females. So on the one side we talk about we should not discriminate, but on the other side we have seen that states have made some special provision. So for that purpose, there is Article 15 clause 3 which gives an exception to Article 15. ये क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या है? तो ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का, अंडर विच स्टेट कैन मेक. ओके, तो फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या है? सो इट इज जस्ट एन एक्सेप्शन. ओके, ये एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 15, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बट इट इज, वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. अभी हम लोग आगे और आर्टिकल देखेंगे जहां पे हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं
to SC, STs and OBC. So these all are positive discrimination. Okay, positive discrimination क्या कहने का मतलब होगा, because these peoples they do not have equal opportunity. ओके जैसे हमने बात की थी आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी हम लोग वहां पे ट्रीट करेंगे जहां पे कंडीशन सेम हो, राइट, वेयर द कंडीशंस आर सेम. वी हैव टेकन एग्जांपल लाइक इफ वी आर taking two individual and they both are normal in a 100-meter race, तो वहां पे क्या होगा, कंडीशन सेम होगा. बट व्हाट इफ अनदर इंडिविजुअल इज रिप्लेस्ड बाय सम फिजिकली चैलेंज पीपल, सो वहां पे अब क्या हो कि दोनों का जो सिचुएशन वो सेम नहीं है. तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू टेक केयर of that person who is physically challenged, right? So for that is what we call as positive discrimination, right? So article 15 clause 3 kya hai? This is an exception to article 15 under which a state can make special provision, right? A state can make special provision for the welfare of women and children, right? So this is what article 15 clause 3. Now we have seen that although we talk about right against discrimination, but our state has provided reservation in whether it's in admission or it's in you can say recruitment process in the government jobs. So we have provided reservation for the SC, STs and socially backward, like other backward classes, right? So for that purpose, we have article 4, 15 clause 4. Okay. So article 15 क्लॉज 4. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या है, तो देखो ये जो क्लॉज है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस दिस और यू कैन से दिस क्लॉज वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 दैट वी हैव स्टडी यस्टरडे कि गवर्नमेंट ने क्या किया था. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेके आया था एंड इन दैट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल ऐड हुआ था, साथ ही साथ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को भी ऐड किया गया था, जो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स और इट एम्पावर्स द स्टेट to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes. Okay, or we can simply say it empowers the state to make special provisions for SCs and STs of India. Okay, so basically it talks about the reservation policy. Okay, justify the reservation policy. So what is Article 15 clause 4? So we can write here that it is you can say introduced by first amendment act. So this thing we have to remember. Okay, it might be asked in prelims. Okay, like through which amendment article 15 clause 4 was introduced. So introduced by first amendment act 1951. So this was the first amendment act, and under this first amendment act 9 schedule were also added. Okay, so this introduced by first amendment act 1951, which अब ये क्या करता है, तो basically it empowers a state to make special provisions, right? Special provisions for the advancement of, we can say, socially and educationally backward classes, or we can simply write here advancement of SCs and STs. So we can both, you can write either for the advancement of socially and educationally backward class for a broader term, or we can simply write here advancement of SCs and ST. SCs and ST मतलब क्या हो गया, scheduled caste or scheduled tribes. Okay, so this is what article 15 clause 4 है. Okay, तो स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस लाइक इट कैन मेक रिजर्वेशन kind of that thing under article 15 clause 4. Okay, now article 15 clause 5, तो ये क्या है, this is same, it empowers the state to make special provisions for the admission. अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एडवांस मतलब जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या है, इट इज टॉकिंग अबाउट द एडवांसमेंट, मतलब SC STs को आप आगे बढ़ाए. ओके, लाइक it can be through reservation, it can be through any other thing. So article 15 clause 5 क्या है, it talks about for the admission of backward classes of citizen in educational institution. तो जैसे हम देखते हैं कि in IITs और medical, so we see there are different classes like OBCs, SC, STs.
तो वहां पे क्या हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 5 वी डू दैट। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या है, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, okay, so this was introduced by 93rd amendment act 2005। और ये क्या करता है, it against empower states, okay, so let me just copy it, just a second, just a second, yeah, okay, so okay, so it empowers the state to make special provisions for to make a special provision for the admission of backward classes, for the admission of backward classes of citizens in educational institution। तो ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ओके। 15 क्रॉस 5 टेल्स दैट इट एम्पावर्स द स्टेट, ये स्टेट को एम्पावर करता है कि वो कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, लाइक जैसे मान लो, अगर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ, जैसे आईआईटी जेईई का एग्जाम है, सपोज देयर इज दैट इज ऑफ 2000 मार्क्स, तो वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट प्रोविजंस बना सकती है दैट इफ एन ओबीसी कैंडिडेट brings 50 marks, so it is eligible to get admission in IITs, or if an SC/ST candidate brings 1200 marks, it is also eligible। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स ओबीसीज और SC/ST के लिए क्या किया गया, घटा दिया गया, ओके, व्हाई, सो अंडर दिस प्रोविजन, so they can, under this provision government can do that, okay। So backward classes of citizen in educational institutions, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं, वेदर इट कैन बी पब्लिक, लाइक इट कैन बी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और इट कैन बी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ओके। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि आप किसी भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आप एक्सेप्शन बना सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल प्रोविजन इफ that is minority educational institution। So this provision contains an exception, and that is for minority educational institution, okay। So what is article 15 clause 5 tells, so this thing we have to remember that it was introduced by 93rd amendment act 2005। it empowers state to make special provisions, okay, for the admission of backward classes of citizen in education institution, whether it is private or public, where it is एडेड और अनएडेड। एडेड एंड अनएडेड कहने का मतलब हुआ कि स्टेट के थ्रू फंडेड है या फिर नहीं फंडेड है, ओके। सो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट, बट you cannot make provision, special provision if it is minority educational institution। तो minority educational institution में जो यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, इट इज नॉट अप्लाइड हियर, ओके, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ये, राइट, एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, राइट। नाउ इन दिस right against discrimination, there is last clause, okay, there is last article we can say, that is article 15 clause 6, okay। So article 15 clause 6 क्या है, तो basically it provides, or you can say it enables government to provide up to 10% reservation। तो ये क्या करता है, enable करता है गवर्नमेंट को to provide 10% reservation to those citizens who are economically weak, okay, to those section of citizen who are economically weak। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमने जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किए हैं, वी विल स्टडी राइट नाउ दैट मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन में ओबीसी को ऑब्जर्व किया गया, राइट।
तो अब क्या है कि ये सारे मिला लेने के बाद भी क्या है कि कुछ पीपल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वेदर दे आर इन जनरल और ओबीसी और एनी ऑफ देम, which are economically weaker section people. Okay, so for that purpose, Article 15 Clause 6 enables government to provide 10% reservation to इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ओके, ईडब्ल्यूएस वी कैन से, जैसे हम लोग देखते हैं व्हेन वी फिल यूपीएससी फॉर्म, ओके, और सम अदर एग्जामिनेशन फॉर्म, सो वी सी देयर आर क्राइटेरिया लाइक जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस. ओके, अब ओबीसी में भी हमने देखा है कि देयर इज क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर. तो दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ कि ओबीसी का रिजर्वेशन कैसे हुआ, मंडल कमीशन क्या था, राइट? व्हाट इज मंडल कमीशन एंड व्हाट वाज इट्स रिपोर्ट्स and what are the criteria to identify creamy layer. So that thing we are going to learn right now. Okay, so article 15 clause 6 ये है. Okay, now we will talk about another article, that is article 16. Okay, article 16 clause 1. Okay, so what article 16 clause 1 say? So it tells that, okay, it says that state should provide equal opportunity to all citizens in case of public employment. Okay, तो लाइक जैसे कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम है या फिर उसकी वैकेंसी है, तो स्टेट शुड नॉट प्रोवाइड अनइक्वल अपॉर्चुनिटी. ओके, वहां पे क्या है कि स्टेट को हमें क्या करना है, स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन, किसी को फेवर नहीं करना है वहां पे, राइट? सो फॉर दैट पर्पस, दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 1, which says, okay, that state to provide equal, sorry, state to provide equality of opportunity for all citizens. Okay, for all citizens in case of public employment. Okay, so state should provide equal opportunity to all citizens in case of public employment, that is article 16(1). Okay, तो article देखो 15 क्या था, article 15 was talking about right against discrimination or discrimination. We have studied these articles, somewhere talking that state should not discriminate. Okay, and some article like article 15 clause 3 provide exceptions to women and children. Article 15 clause 4 talks about exception to advancement of SC and STs. And article 15 clause 5 again talk about admission of backward classes of citizens, okay, in education institution. And then article 15 clause 6, which talks about 10% reservation to WS. Now article 16 is talking about in terms of employment. Okay, so for that there is article 16 clause 1, which tells that the state to provide equality of opportunity to all citizens in case of public employment. With this regard, there is another article, that is article 16 clause 2, which prohibits the state from discriminating against any citizen, okay, on the ground of religion, race, caste, or any of them in providing अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को, इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग against any citizens on the ground of same religion, race, caste, sex, place of birth, residence, descent it means once, okay, once आपका descent or any of them. So it provides state from discriminating. Okay, so that is what article 16 clause 2, and then article 16 clause 3. Okay, so in the last, need not to worry, first go through the article, okay, all the article, what all are other article tell,
And in another video, we will see how we can remember all these articles. We will create, mnemonics or mind map through which we can easily remember all these articles from article 14 to article 32, how we can remember all those articles. Okay. Now we will see articles 16 clause 3. So right now in Article 16 Clause 2, we see that states should not discriminate to any citizen on the ground in providing public employment. Okay, in providing employment, states should not discriminate. Okay, in any of the following religion, race, caste, sex, place of birth, residence, descent, or any of them. But in certain cases, we have seen in our country, like if there is employment in Bihar, so they put criteria that, or you can say they prefer the people who is residing in Bihar. Okay, so they get, the people of Bihar get an opportunity that if they are the people of Bihar, they are residing in Bihar, so they get more opportunity where those people who are coming from, say, UP or Gujarat or anywhere else. So for that purpose, Article 16 Clause 3 empowers the Parliament. Okay, so Article 16 Clause 3 क्या करता है? So basically it empowers Parliament to provide by law a residence as a ground और क्वालिफिकेशन. ओके, तो एक क्राइटेरिया डाल दिया गया कि रेसिडेंस को एज अ ग्राउंड या क्वालिफिकेशन इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट. ओके, सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 16 क्लास 3 जो कि इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि एक रेसिडेंस एज अ ग्राउंड, एक क्वालिफिकेशन. अगेन क्या ये देखो एक्सेप्शन है. स्टेट आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी सिटीजन को, राइट. फिर 16 क्लॉज 2 का कि प्रोहिबिट करेगा स्टेट को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग. बट इन आवर कंट्री वी सी इन सम स्टेट, okay, whether it is Karnataka or Bihar or Telangana, we see state legislature makes like when they uh, take exam of state PSC. Okay, so in state PSC they give some preference, like the people who is from Tamil Nadu, they get more preference rather than people who is coming from Maharashtra or from Bihar. So that is what this is a ground. Residence as a ground is qualification there. That people who is of Tamil Nadu, Tamil speaking people get more preference rather than the people who is from Maharashtra, Gujarat or Bihar or Andhra Pradesh. Right. So this is what Article 16 Clause 3 is. Okay. Now we will see Article 16 Clause 4. Okay. So Article 16 Clause 4 क्या है? So it makes again, okay, तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था for the advancement of SCs and ST or other backward classes. So see Article 16 Clause 4 is similar like that. Okay. So let me just Article 16 Clause 4. So what Article 16 Clause 4 tells? Basically it empowers the state. Okay, it empowers the state to make special provision in the favor of backward classes of citizens. Okay, in reserving post of public employment. Okay, तो ये क्या करता है? तो basically it empowers state to make special provisions in favor of backward classes. So I am writing here BC. Okay, so backward classes of citizens इन रिजर्विंग पोस्ट. तो क्या होगा कि स्टेट जैसे मान लो कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पोस्ट निकाल रहा है, लाइक सपोज कोई वैकेंसी निकालता है, दे पुट लाइक 300 वैकेंसीज आर देयर. तो अब 300 वैकेंसीज में क्या कर सकता है स्टेट कैन रिजर्व लाइक 150 सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज और ओबीसीज. ओके, तो 150 सीट क्या कर सकती है सरकार, 150 सीट क्या कर सकती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो रिजर्व कर सकती है. सो फॉर दैट पर्पस आर्टिकल 16 क्लॉज 4 empowers the state to doing this thing
Which articles empowers the state? Article 16 clause 4 empowers the state to make special provisions in favor of backward classes of citizens in reserving post of public employment Okay, तो अब देखो, SCs, STs and OBCs are there. तो how OBCs come into the rule? OBC को कैसे आइडेंटिफाई किया गया? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ ओबीसी वाज फॉर्म, ओबीसी को कैसे आइडेंटिफाई किया गया हमारे कंट्री में. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मंडल कमीशन वाज फॉर्म. ओके, मंडल कमीशन को फॉर्म किया गया था. सो वी विल हैव सम knowledge what is Mandal Commission. We will know in the post independence history when you will study India since independence. So there you will also learn कि Mandal Commission क्या था, right? So for now we will have some introduction what is Mandal Commission. So Mandal Commission, it was actually appointed by the Morarji Desai government, okay, in 1979. So we can write here in 1979 Morarji Desai government appointed second backward classes commission under the chairmanship of बीपी मंडल. ओके, और इसी वजह से इसका क्या नाम दिया गया, इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन. सो मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई भी कमीशन फॉर्म हुआ तो उस कमीशन का नाम कैसे दिया जाता है, तो हुएवर विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन, तो उनके नेम पे क्या होता है, उस कमीशन का नेम दिया जाता है. तो यहाँ पे मंडल कमीशन नेम क्यों दिया गया है, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन वाज बीपी मंडल. और ये कमीशन को कब अपॉइंट किया गया, तो इन 1979 दिस कमीशन वाज अपॉइंटमेंट बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट. ओके, और ये कमीशन ने कब रिपोर्ट सबमिट किया, तो इट सबमिटेड इट रिपोर्ट्स इन 1980. और क्या रिकमेंड किया गया, तो व्हाट रिकमेंडेशन इट गिव्स, तो रिकमेंडेशन क्या था, सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वाज द रिकमेंडेशन. तो रिकमेंडेशन क्या था, तो दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट रिजर्वेशन ऑफ 27%. ओके, रिजर्वेशन, इनका रिकमेंडेशन ये था कि अराउंड 3000 समथिंग पीपल, ओके, अपार्ट फ्रॉम SCs एंड ST, SC STs को छोड़ के देयर आर सेवरल कम्युनिटी, सेवरल पीपल हु इज बैकवर्ड, ओके, जिनका जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. तो दे आइडेंटिफाई दोज पीपल एंड दे रिकमेंडेड दैट there should be reservation of 20% government jobs for those classes which we call today as OBC. Okay, and the term was given to those classes was other backward classes. So the total reservation, अब कुल मिला के जो रिजर्वेशन हुआ SC ST प्लस OBC को मिला के वो कितना हो गया, it was amounted to 50%. तो what this commission recommended, तो it recommended reservation of 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी. ओबीसी के लिए 27% दिया गया. तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया, टोटल रिजर्वेशन कहने का मतलब हो गया SCs प्लस STs प्लस OBCs. तो कुल टोटल मिला के कितना हो गया, तो इट अमाउंट्स टू 50%. तो अब क्या है, जो 100% अगर जॉब है, okay, there is 100% vacancy, so there will be 50% reservation will be given to the candidate who belong to the SC, ST and OBC. और OBC को कितना है, 27% रिजर्वेशन दिया गया. ओके, तो ये कमिटी ने रिपोर्ट दे दिया. और कब इसे इंप्लीमेंट किया गया, तो इन 1990 वीपी सिंह गवर्नमेंट. ओके, तो ये किस गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, तो वीपी सिंह गवर्नमेंट के थ्रू ये इंप्लीमेंट किया गया था. Okay, in 1990, VP Singh government declared reservation of 27% to OBC. Okay, तो 1979 में क्या हुआ, कमीशन को फॉर्म किया गया, उस कमीशन का नाम दिया गया मंडल कमीशन. 1918 में
इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1980 में, और रिकमेंड क्या किया गया कि रिजर्वेशन ऑफ 20%, 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसीज। और फिर आफ्टर 10 ईयर, ओके, सो देयर इज अ गैप, यू कैन सी ऑफ 10 ईयर ऑफ गैप। तो 10 ईयर के बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके डिक्लेयर किया रिजर्वेशन 27% टू ओबीसी। ओके, तो उसके बाद क्या किया गया, इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन इंदिरा साहनी केस में। ओके, सो देयर वाज अ केस, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। सो देयर वाज अ केस, ओके, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया case 1992. Okay, so this case we have to remember because this might be asked. तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में इसे चैलेंज किया गया और एससी ने क्लैरिफाई किया इस रिजर्वेशन को। ओके, तो दिस रिजर्वेशन वाज चैलेंज इन दिस, सो एससी ने क्या क्लैरिफाई किया, ओके, सो एससी क्लैरिफाइड दिस रिजर्वेशन एज अ लीगल पोजीशन। ओके, मतलब इसे एक्सेप्ट किया, और एससी ने, कोर्ट ने क्या कहा, ओके, तो कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो रिजर्वेशन 27% दिया जा रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ओके, बट कोर्ट ने इसके साथ क्या डायरेक्शन दिया स्टेट को कि आप इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करें, और जो रिजर्वेशन 27% मिलेगी वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगी, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगी। ओके, सो क्रीमी लेयर अमॉन्ग ओबीसी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो कोर्ट हेल्ड 27% रिजर्वेशन, court held that 27 reservation for OBCs in public employment क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ओके, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बट कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया, बट कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर among OBC and remove them from benefits of reservation। तो जो क्रीमी लेयर है उसे क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन के बेनिफिट से हटा दिया जाएगा। कोर्ट का ये इंस्ट्रक्शन था स्टेट को। तो इसी के रिगार्ड में क्या हुआ, फिर रामनंदन कमेटी अपॉइंट किया गया। ओके, सो इन दिस रिगार्ड में क्या हुआ, सो लेट मी जस्ट टेल यू, राम नंदन कमिटी was appointed, ram nandan committee was appointed to identify the creamy layer। okay, to identify the creamy layers among the OBC। okay, among the OBC। और इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कब किया, तो सबमिटेड रिपोर्ट इन 1993। तो रामनंदन कमेटी क्या हुआ, अपॉइंट किया गया आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट किया गया, रामनंदन कमेटी, और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1993 में। ओके, और कुछ क्राइटेरिया दिया, ओके, एंड गिवन सम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई creamy layer people। okay, criteria to identify creamy layer। तो क्या क्राइटेरिया दिया गया, तो सबसे पहले कि दोज पर्सन, ओके, पहला क्राइटेरिया क्या था कि दोज पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो उसे क्रीमी लेयर में लिया जाएगा. इट मीन्स दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन. तो पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या हो गया? लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एक्सेट्रा. ओके, तो person holding constitutional post, they will be treated as people in creamy layer and they will be excluded from the benefits of reservation. सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज. तो जो लोग भी, those people who are in the group A and group B officers in all India central and state services, those people will also be excluded from the benefits of OBCs. Okay, so they will be in the creamy layer criteria. Okay, and third, person who are rank of colonel or above in the army or navy or air force or paramilitary force, so they will be also excluded. Okay, and fourth criteria was what? अगर person का जो gross annual income है, if person gross annual income is more than rupees 8 lakh, अगर 8 lakh से ज्यादा का income है, so they will also be excluded from the benefits of reservation of OBC. So they will be in the creamy layer criteria. Okay, तो इसी रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस रिपोर्ट वाज गिवन एंड द क्राइटेरिया वाज आल्सो गिवन, so national commission for backward classes was established. Okay, so after the report, so let me just tell you, after the report, national commission for backward classes was established in 1993. और किस एक्ट के थ्रू? ओके, तो बाय एन एक्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 93 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ओके, उसके बाद क्या हुआ? इन 2018 इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया थ्रू 102nd अमेंडमेंट एक्ट. ओके, so this commission, national commission for backward classes, okay, was given a constitutional amendment, constitutional status, given constitutional status through 102nd amendment act 2018. ओके, और इसको किस आर्टिकल के अंदर में ऐड किया गया? इट वाज एडेड अंडर आर्टिकल 338B. ओके, सो दिस NC BC class, National Commission for Backward Classes, okay, so which we are going to study again in this polity in the later chapter. We will understand this commission, what is this commission. So this commission was given constitutional status by 102nd Amendment Act of 2018 and was added under Article 338B. Okay, so this was the complete, you can say, the Mandal Commission. Mandal Commission and aftermath, you can say Mandal Commission form हुआ, उसने अपना रिपोर्ट दिया कि हाँ there should be a reservation, and then that reservation was challenged in Supreme Court under Indira Sawhney versus Union of India case. Supreme Court ने भी पोजीशन क्लैरिफाई किया कि yes 27% is correct, there should be reservation for OBC, but आप क्या करो? You should identify the creamy layer and you should exclude them from the benefit of रिजर्वेशन. तो उसके बाद गवर्नमेंट ने रामनंदन कमेटी का अपॉइंट किया गया, करी, एंड देन आफ्टर रामनंदन कमेटी सबमिट किया अपना रिपोर्ट 1993 में और क्राइटेरिया दिया. ओके, और आइडेंटिफाई किया क्रीमी लेयर को. ओके, एंड देन आफ्टर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैब्लिश हुआ. नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस क्या करती है? बेसिकली दे चेक वेदर द पर्सन इज करेक्टली इंक्लूडेड इन द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया,
ओके देखो ओबीसी में क्या हो गया, दो डिवीजन हो गया, एक हो गया क्रीमी लेयर, एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वाले लोगों को क्या होगा कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगी, नॉन क्रीमी लेयर वाले को क्या होगा, रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेगी। तो अब इसको देखेगा कौन, हु विल आइडेंटिफाई, तो उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया, जो देखेगा कि पीपल राइटली इंक्लूड हुए हैं या नहीं, या जो पीपल रॉन्गली एक्सक्लूडेड तो नहीं हो गए हैं, गलत तरीके से एक्सक्लूड तो नहीं कर दिया गया है। तो फिर उसी कमीशन को क्या हुआ, थ्रू 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया एंड इट वाज एडेड अंडर आर्टिकल 338 बी। ओके, सो दिस इज व्हाट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इन दिस केस अगेन, इंदिरा सानी कोर्ट ने और भी जजमेंट बताया। ओके, कोर्ट ने क्या कहा, सो लेट मी जस्ट राइट यू, ओके लेट मी जस्ट गिव हियर फर्स्ट एंड देन सेकंड। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस shall not exceed more than 57%। ओके, तो रिजर्वेशन क्या है, I will write here। okay, SC held that reservation in favor of backward classes। okay, so reservation in favor of backward classes, so I will write here BC, shall not exceed या not should not be more than 57% of total seat। ओके, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ क्या एससी ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब आप जब हायर कर रहे हो, आप जब रिक्रूट कर रहे हो, इट शुड बी ओनली बी गिवन टू एट दैट टाइम, रिक्रूटमेंट के टाइम में आप ये रिजर्वेशन दोगे, इट इज नॉट बी गिवन फॉर द प्रमोशन पर्पस। मतलब अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हो तो वहां पे यू विल नॉट सी कि वेदर दैट पीपल इज एससी और एसटी और ओबीसी, इट इज जस्ट ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस, you should not give this reservation for the promotional purpose। okay, so SC held that reservation policy, okay, it should be only at the time of recruitment, it should be only at the time of recruitment, okay, and not in promotion, and not in promotion। ओके, अगर आप प्रमोशन में करते हो तो इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये असंवैधानिक हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, देन आफ्टर व्हाट पार्लियामेंट डिड, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट इंट्रोड्यूसेस न्यू आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ओके, थ्रू 77th अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो पार्लियामेंट में एक नया अमेंडमेंट किया, दैट वाज 77 अमेंडमेंट एक्ट 1895, थ्रू विच आर्टिकल 16 क्लॉज 4A वाज इंट्रोड्यूस, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एंड एससीज। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट brings 70, okay, or you can write here simply parliament introduce article 16 clause 4A through 77th amendment act 1985। ओके, तो पार्लियामेंट ने नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 16 क्लॉज 4A 17 थ्रू 77th अमेंडमेंट एक्ट 1985, जो कि प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन in promotion, for reservation in promotion for SCs and STs। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे कर दिया था, बट पार्लियामेंट ने क्या किया, थ्रू 77 अमेंडमेंट एक्ट एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 था, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ओके, विच प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SCs and STs। okay, so this was article 16 clause 4, and this after 16 clause 4, 16 clause 4A was also added। okay, now we will see article
16 क्लॉज 5। ओके, तो एक नया और इसमें एम्प्लॉयमेंट में क्राइटेरिया ऐड किया गया, एंड दैट क्राइटेरिया वाज रिलीजन एज ए ग्राउंड भी स्टेट चेक कर सकती है या क्वालिफिकेशन बना सकती है इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 एम्पावर्स, ओके देखो 16 क्लॉज 4 में क्या था, 16 क्लॉज 4 में एससी एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन था, 16 क्लॉज 3 में रेसिडेंस एज ए स्पेशल प्रोविजन था, मतलब आप एक ग्राउंड बना सकते हो। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में अब क्या नया ग्राउंड है, क्वालिफिकेशन क्या है नया, तो इट इज रिलीजन। ओके, तो empowers the state to prescribe religion as a ground, okay, as a ground, or you can say or qualification in certain categories of public employment। ओके, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिलीजन को भी एज ए ग्राउंड या क्वालिफिकेशन बना सकती है कुछ कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 व्हाट इज टेलिंग, तो गवर्नमेंट कैन भी take religion as a ground to provide employment in certain categories of public employment। Okay, so this is what article 15 clause 5 is। Okay, and then article 16 clause 6, so it again talk about to provide 10% reservation इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू ईडब्ल्यूएस क्लासेस। और इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 2019 में एक नया अमेंडमेंट किया गया जो कि प्रोवाइड किया करता है 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस पीपल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सिंपली एम्पावर्स स्टेट टू प्रोवाइड up to 10% reservation to which section of people, to EWS economically weaker section people in public employment, in public employment। और इसको किस एक्ट के थ्रू लाया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो इंट्रोड्यूस थ्रू 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये रिसेंटली लाया गया था 2019 में। ओके, 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, थ्रू विच 10% रिजर्वेशन वाज गिवन टू ईडब्ल्यूएस पीपल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 16। ओके, सो आर्टिकल 16 क्या टॉक करता है, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट, ओके, अंडर विच देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस। ओके, लाइक सबसे पहला प्रोविजन था कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। 16 क्लॉज 2 इट वाज अबाउट prohibiting state from discriminating people। Article 16 clause 3 there was some exception given in matter of employment, okay, like residence as a ground। 16 clause 4 फिर again an exception was given, okay, and similar article 16 clause 5 and article 16 clause 6। okay, so article 16 talks related to public employment। okay, now we will see article 17। okay, so article 17 is what, article 17 is it abolishes untouchability। okay, so it is about fundamental right against untouchability। okay, and it abolishes untouchability in all its form। okay, जैसे पहले के टाइम में बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। okay, we have seen in earlier time period of India। so article 17 क्या है, it abolishes untouchability in all its form, and for this purpose there was an act which is called untouchability offences act 1955 जो कि प्रेस्क्राइब करता फॉर पनिशमेंट। ओके, अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, any citizen of people of citizen of India who is practicing untouchability, so it will be prescribed as punishment under the untouchability offense act 1955। फिर बाद में इसे और स्ट्रेंथन करने के लिए, इस एक्ट को और मजबूत करने के लिए
This act was given as in the form of Civil Right Protection Act 1976. तो इसको फिर क्या गया, बाद में अपडेट करके सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का रूप दे दिया गया. ओके, तो आर्टिकल 17 क्या है, तो इट abolishes untouchability in all its form, in all its form. Okay, and to do this untouchability offenses act 1955, okay, was made, and it prescribe punishment for practicing untouchability. ओके, और बाद में क्या किया गया, बाद में इसे स्ट्रेंथन करने के लिए, ओके, स्ट्रेंथन करने के लिए इसे फॉर्म दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976. Okay, so article 17 is all about, it is talking about untouchability. Okay, it abolishes untouchability in all its form. Okay, now we will see another article, okay, which is related to conferring any title. जैसे हम लोग पुराने टाइम में देखते थे, there was title given to the king, Maharaja Dhiraj, or we have seen in ancient history when we learn about Mauryan Empire. So there was Nanda dynasty, which founder was Mahapadmananda, who has given him title as a destroyer of all the Kshatriya. Okay, so those kind of title, if we see in today's period, there is no SS title. So for that purpose, Article 18 Clause 1, so it prohibits the state from conferring any title. Okay, किसी भी टाइटल देने के लिए ये प्रोवाइड करता है, अदर देन इट शुड बी एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन. ओके, एकेडमिक जैसे जिन्होंने पीएचडी किया तो दे पुट their name as डॉक्टर एबीसी. ओके, सो डॉक्टर वो अपना प्रीफिक्स लगाते हैं, राइट. So those kind of title is permitted, but other than that, like Maharaja Dhiraj or any kind of this, those titles are prohibited by article 18 clause 1. तो article 18 clause 1 क्या है, तो it prohibit state from conferring any title other than academic or military distinction. ओके, अब इसमें से क्वेश्चन ये हो सकता है, ओके राइट, यू माइट हैव दिस क्वेश्चन किस दैट द नेशनल अवार्ड और पद्मा अवार्ड दैट इज अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, so can be used as prefix or suffix, like it can be used as like Padma Vibhushan awarded ABC, okay, or Bharat Ratna ABC. So can be written like that? So no. Okay, it is also applicable to those also. जो भी नेशनल अवार्ड या पद्मा अवार्ड मिलते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स विद द नेम. Okay, so it is basically just an award. Okay, they are award, or you can say they are just for they are just an award. You cannot use those award as your prefix or suffix with your name. Okay, so national award like Padma award or Bharat Ratna award, which you see, it cannot be used as suffix or prefix. This thing should be clear, that this is applicable. This prohibit state from conferring any title. It is also for that those people who get this awarded, they cannot use those award as suffix or prefix with their name. Okay, so this is what article 18 clause 1. Okay, now we will see another article in article 18, that is article 18 clause 2. तो अब देखो क्या कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, चलो इंडिया के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट confer any title to the people, but क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, बट
Can citizen of India accept any title from any foreign state? मान लो कोई भी people of India, can it accept any title from the China or Pakistan or maybe UK, US, any foreign country? So no, any citizen of India cannot accept any title from any foreign state. For that purpose, you have to seek permission from the president. Okay, आपको president से permission seek करना होगा. If president permitted you, you can take that title. If not, you cannot. तो इसके लिए we have article 18 clause 2. ये क्या करता है? ये prohibit करता है. Okay, it prohibit the citizen of India. It prohibit the citizen of India from accepting any title from any foreign state. From any foreign state, किसी भी foreign state से, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो या फ्रेंडली रिलेशन हो, किसी भी नेशन से वो प्रोहिबिट करता है. ओके, and in this there is last article, that is article 18 clause 3. So there might be some foreigners who is holding any office of profit or trust under Indian state, so they are also not entitled to take any title from any foreign state. If they have to take, so they have to seek permission, they have to take consent from the president of India. If they give, you can take. If they don't, if president does not give you the order, so you cannot take. Okay, so it also prohibit. Okay, so a foreigner, or simply write here, prohibit any foreigners who is holding an office of profit or trust under Indian state from accepting any title from foreign state, any title from foreign state. And same, if if he want to take that title, he have to seek permission from the president of India. Okay, so this is what. Okay, so in this lecture we have studied from article 15. Okay, so we have gone through the various provisions. Okay, so article 15 is what? It is talking about the discrimination, and inside that there are some exceptions like for women and children, for socially backward classes. Then article 16, it talks about the employment. Okay, employment opportunity. And then article 17 we have seen, it talk about the untouchability, and article 18 is about titles. Okay, titles from any foreign state. So in the next lecture, that is lecture 3, we will see the rest remaining articles from article 19. Okay, and the remaining articles which will be left, article 19, 20, 21. Okay, so all those articles we will cover in that lecture, and we will try to complete all those articles in that lecture. Okay, so thank you everyone. Go through the lecture. If there is any issue, comment in the comment section. I will be there to help you.